इतने सारे प्रोडक्ट्स और इतने सारे चैनल्स जहां आप इन्हें लिस्ट कर सकते हैं। Want to know how you can streamline all of these through a single dashboard? With SmartHub by Amazon, सभी मार्केटप्लेसेस और प्लेटफॉर्म्स को एक ही पैनल में इंटीग्रेट करके अपने ऑर्डर्स और वेयरहाउस को इजीली मैनेज करें, बस एक जगह से। With industry best 99.9% uptime और customizable options, SmartHub आपके बिजनेस को दे रहा है full control और flexibility. Let's explore how SmartHub can transform your operations. First and foremost, let's understand the onboarding process. We begin with documentation for back-end integration. Here you need to list your products or connect your products across the different platforms into one central SmartHub SKU. Our team will help you with this step. Next is filling out an Excel sheet जहां आपको specify करना पड़ेगा अपना SmartHub SKU, माने आपका unique identifier that will help map your Amazon SKU, Flipkart SKU, Shopify SKU into a singular item listing, product name, brand, category, dimensions of the product, ASIN, MSKU, then the channel name and the common inventory जो आप push करना चाहते हैं। इस शीट को फिल करने के बाद the in-house support team at SmartHub will assess and map out the back end, जिसके बाद आपको अपना हैंडल मिल जाएगा। अगर आप खुद से मैपिंग प्रोसेस कंप्लीट या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको लॉग इन करना होगा onto smarthub.amazon.in through your Seller Central or Seller Flex login details. लॉगिन करने के बाद go to products and select add और manage products अपने मैपिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको 50 से 100 प्लस प्रोडक्ट्स मैप करने हैं, क्लिक ऑन बल्क अपलोड एंड सिलेक्ट ऐड न्यू प्रोडक्ट अंडर ऑपरेशन टाइप और अपना टेम्पलेट डाउनलोड करें। टेम्पलेट को ओपन कीजिए एंड फिल आउट द डिटेल्स जो हाईलाइट किए गए हैं येलो कलर में। बाकी आप स्किप कर सकते हैं इफ यूड लाइक। शीट फिल करने के बाद उसे सेव करें एंड अपलोड करें ऑन द सेम पेज जहां से आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया था। अपलोड के बाद द लिस्टिंग विल अपीयर ऑन योर ऑल प्रोडक्ट्स टैब। अब समझते हैं न्यू प्रोडक्ट्स की मैपिंग कैसे करें। बल्क ऑर्डर्स पे क्लिक करके सिलेक्ट न्यू SKU मैपिंग अंडर ऑपरेशन टाइप और टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिए। Fill in the details like SmartHub SKU, Channel SKU and select the channel name from the drop-down. Once done, save it and upload it on the saved page where you downloaded the template form. You can apply the same process to disable or enable or edit an SKU mapping. Remember, you can upload only one channel SKU to one SmartHub SKU as it's the central SKU for now. We are working on something that will let you map multiple channel SKUs into one SmartHub SKU in a few weeks' time. अब बात करते हैं about how to enable, disable or edit mapping if you're only mapping 5 to 10 products and don't need bulk mapping. Select the Map tab under the Add or Manage Products tab, and you can just toggle between on and off under the Enable tab. You can also edit the mapping directly through the Action tab by clicking on Edit Mapping. Unmapped products को map कर सकते हैं under the Unmap tab by clicking Add Mapping under the Action tab. आप job status भी check कर सकते हैं for reports of your bulk uploads to know if they are successfully completed or not. Once this step is done, आपको अपने नए प्रोडक्ट के अगेंस्ट नई इन्वेंट्री पुश करना होगा। आइए देखते हैं आप वो कैसे कर सकते हैं। To upload new inventory, go to Inventory and select Upload Inventory. Download the template and fill out the details such as SmartHub SKU and quantity. इसे सेव करके अपलोड कर लीजिए। If you want to check your inventory status across the different platforms, select Inventory Dashboard under Inventory to see your sellable inventory, reserved inventory, buffered inventory, etc. आप अपने हीरो SKU या फास्ट मूविंग SKUs को ऑडिट भी कर सकते हैं by selecting Audit under the Inventory tab. This will show all events related to SKU like inventory updates, fulfilled orders, cancelled orders, enabled or disabled inventory all in one place. Now, if you want to take a look at all your orders, you can select All Orders under the Orders drop down. यहाँ आपको ऑर्डर ID के साथ डिटेल्स जैसे कि ऑर्डर स्टेटस, कलेक्शन, कंटेंट सब दिखेंगे। टॉप राइट कॉर्नर पे ऐप कैलेंडर आइकन को क्लिक करके
अपने ऑर्डर्स को डेट वाइज भी चेक कर सकते हैं अक्रॉस ऑल योर चैनल्स। आप चैनल स्विच करके हर चैनल के ऑर्डर डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं। Now let's see how you can monitor and use the settings features. Within settings, आपको पहले Java and QZ-Trace softwares डाउनलोड करने होंगे, which you can simply do by clicking on the link given right below. इनको डाउनलोड करें and run them in the background while using SmartHub as they are needed for the printing process. Next step है setting your printing requirements and preferences. SmartHub के printing suggestions are always mentioned on each line item. आप इन्हें अपनी नीड के हिसाब से सेट करके सेव कर सकते हैं। After this, it's best कि आप 1-2 टेस्ट प्रिंट्स करके देखें if everything is running smoothly. आप सेटिंग्स पैनल से बॉक्स सेटिंग्स, यूजर मैनेजमेंट्स, हॉलीडेज एंड लोकेशन भी मैनेज कर सकते हैं। That's it. Now you're onboarded and set to begin with processing your orders. With that, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। Don't forget to subscribe to our channel for more such videos.